progress.
Hello everyone, good evening. Good evening, sir. Good evening everyone. Guys, please put on your camera. Okay. As Kevin, Shravani, Janani, Sanika, Ibrahim. Guys, put on your camera first. Okay guys, so what were we doing in the last class? I guess Deepak sir took your last class, right? Okay. So what things were covered in the last class? Can you please help me with that? So we started with integration and we've done a couple of types of problems Okay, along with some properties of definite integrals. And great. we did a few trigonometric identities and how to solve those type of questions. And I think that's where we have to carry on from. Okay, noted. Okay, give me a moment, I'll share my screen, okay? Okay guys, I want this session to be very interactive so that like if you have any doubt, feel free to ask me, okay? Yes. सोचने का नहीं है, just throw the doubts on me. चलो okay. एक्चुअली वीडियो इज ऑफ क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ तो उसके कारण. चलो आ जाओ. ओके लेट मी चेक वंस कि तुम लोग क्या किए हो. आई गेस आई हैव. ओके चलो आ जाओ. डेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट क्लास. Sorry, sir. Guys, you did definite integration last class or only the indefinite one? Uh, Indef sir, we were You like like you guys did definite or indefinite indefinite last mostly class? we did. Indefinite, right? Sir, Okay, fine. definite was last class. Sorry, Prakalp? Sir did definite integral last class. Okay, we did definite integral. Okay. So you did questions related with mod? Done. Done. Good. And questions related with like, trigonometric functions at, at numerator and at denominator, we were having trigonometric function as well, right? Multiplied with some trigonometric function, divide by trigonometric, right? Correct? Then you did problems related with mod, correct? So Yes, basically, sir. these all were the most important topic from where the questions are being asked in the recent exams, basically in the recent CBSE exams. Okay. Now moving ahead, see, if we are aiming like for 80 out of 80 or like for 100% of marks, so it's not like we just need to do the important ones, right? Important ones के साथ साथ we also need to do those questions जो कि भाई आए नहीं है but they can come, they are expected to come, right? Okay.
So fine, we'll start with NCRT and we'll end with those previous year questions. Okay, is that fine? Okay. So let's take up this question. So guys, take 5 minutes of time and try to solve this question. I hope you guys are much, versed with the properties of the definite integration. So use the properties and solve this question. I have some other set of questions also first. Okay, Chitrans. Guys, put on a camera, na. Camera तो on करो. करेक्ट चित्रांश सानिका करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मुझे नाम लेके कैमरा ऑन करवाना पड़ेगा क्या? फैज, प्रकल्प, करेक्ट. श्रावणी करेक्ट, गुड. फैज, प्रकल्प, बिलाल, प्रनाथी, विघ्नेश, प्रणव, श्रुतिका, अमरान, रितेश, बिलाल, महक, जसीम, इब्राहिम, सानिका, श्रावणी. गाइस पुट ऑन अ कैमरा एवरीवन. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सेवन फोन. बिलाल, फोन में हो? आई थॉट यूर इन योर होम. चलो आ जाओ, आ जाओ. लेट्स सी कोई बात नहीं, ठीक है. जिनका जीरो आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया लेट्स सी पीपल. अच्छा, हु सॉल्व दिस? चित्रांश. Yes, sir. चित्रांश कैसे किया ये क्वेश्चन, कैसे किया? हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Sir, I use the property, so I get Mm-hmm. negative cos x. Then I'll integrate, I'll get negative sin Sorry, x. you used the property. Which property you used? Sir, cos 2x is equals to चलो थैंक यू, बहुत बढ़िया. cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. करेक्ट. अब यहां पर आई कैन सी कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है. दिस मीन्स आई नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड विद अ माइनस साइन, राइट? So minus cos 2 theta is equal to sin square theta minus cos square theta. Correct, people? Correct me if I'm wrong. Yeah, is it fine?
चलो, आई होप दिस इज करेक्ट। फाइन। यहां पर आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा। वी कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx फ्रॉम 0 to 5। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनीवन? No, sir. ओके ओके। अब दिस कैन बी रिटन एज cos 2 times x by 2, right, which is equal to cos x। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Sin x. sin x, right? So this will be minus of sin x, correct? Limit from 0 to pi। अब जब लिमिट पुट करके तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा? करेक्ट, which is equal to 0। Yes, sir. क्लियर है ये सबको? देखो, जनरली क्वेश्चंस रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्री आर बीइंग आस्क्ड इन दिस सीबीएसई एग्जाम। सीबीएसई के एग्जाम्स पे इनफैक्ट इफ यू सी जेई में आल्सो, हालांकि आई शुड नॉट टेक द नेम ऑफ जेई में अभी के समय पे, बट स्टिल तो वहां पर भी तुम लोग देखो, बस इससे थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इंटीग्रेशन इंक्लूड्स दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। दो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से नहीं पूछे जाते इन एनी ऑफ द एग्जाम, लेकिन उनके एप्लीकेशंस आते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई, गो थ्रू द आइडेंटिटीज, गो थ्रू द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज था। और ये क्या हुआ? चलो गाइस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे हुआ? इसमें तुम्हें लिमिट्स के साथ भी थोड़ा, समझ रहे हो, कुछ कुछ करना पड़ेगा।
Done, guys? Done, people? No, sir. I guess some of the names are known to me. Jolin, Shravani, Ritik, I guess I know this boy. Kevin also. Bilal. Pranav Kumar Patel, I guess I know this boy. Dinakar also. Okay. अच्छा कैसे कर रहे हो कोई मुझे बता सकता है कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि हाउ यू गाइस आर टेकिंग द अप्रोच So we can do u is sine phi and then substitute and differentiate. And then you will do अच्छा you will take sin phi as u. u ठीक है ले लिया फिर So du by d phi and then like the cos, like the cos 5, cos to the power 5 will become cos to the power 4 because we'll cancel. And then you can do 1 minus sine square phi का whole square. समझ गया सही जा रहे हो करो वेरी गुड वेरी गुड so this is basically sin phi according to Chitrans we are supposed to write this as cos to the power 4 phi into cos phi d phi बिल्कुल सही है अच्छा 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 फिर इसने sin phi को u ले लिया तो फ्रॉम देयर वी गेट du is equal to cos phi d phi करेक्ट इसको विल टेक एज du ये cos to the power 4 phi है we can write this as cos square phi का स्क्वायर दिस इज रूट sin phi अभी इसको du मत लो अभी लेट्स write this as cos phi d phi root sin phi we can write this as 1 minus sin square phi का होल स्क्वायर into cos phi d phi बहुत सही उसके बाद बस तुम्हें सब्स्टिट्यूट करते रहना है तो अल्टीमेटली यू विल गेट यहां से आ जाएगा रूट टी और इसको 1 माइनस अच्छा यू लिया तुमने फाइन यू 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज डी यू सही है सॉल्व करने पाएगा रूट यू 1 प्लस यू टू द पावर 4 माइनस 2 यू स्क्वायर डी यू बहुत प्यार से फिर इसको सॉल्व कर दो यू विल गेट फ्रैक्शंस में लिख लो सबको पावर्स को तो यू के पावर में 1/2 प्लस यू टू द पावर 9/2
ना रहा है, और प्लस माइनस 5/2 माइनस 2u का पावर में 5/2। करेक्ट, यही आ रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा किसी को? एनीवन विद अ डाउट? एनीवन विद अ डाउट? No doubts. नो डाउट, गुड 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 गुड। अच्छा देखो, बिफोर वी वर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू फाई, राइट? Before we were integrating with respect to phi, but later when we substituted sine phi as u, now we are integrating, now we are integrating with respect to u, है ना? Correct, Ritik, very good. So since we have changed the variable जिसके respect में we are integrating, तो हमें हमारी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. We need to change our limits also. Before the limits were from 0 to pi by 2, यानी कि phi was varying from 0 to pi by 2. तो u कहां से कहां वेरी करेगा? u मीन साइन फाई। करेक्ट, करेक्ट पीपल? Yes. तो साइन जीरो कितना होता है बेटा? 1, हाउ मच इज साइन जीरो? 0, जीरो। एंड हाउ मच इज साइन पाई बाय टू? 1, 1. वन। दैट्स इट। द लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वन। नाउ यू नो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट? अब बस इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके हम लोग वैल्यू लिख देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. किसी को डाउट है बेटा? एनीवन विद अ डाउट? डाउट होगा तो शर्माने का नहीं है, पूछ लेने का है अभी। अभी अपन लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज देयर स्टिल टाइम लेफ्ट फॉर द एग्जाम। सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़ सकते हैं अपन? एटलीस्ट डू अ थम्स अप गाइस, थोड़े तो इंटरेक्टिव रहो। वी आर द फ्यूचर टेक्नोक्रेट। यस, इट्स क्लियर। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। Secretary, do you have the final answer for this question? फाइनल आंसर? या वी नीड टू सॉल्व इट देन। ओके आ जाओ, लेट्स सॉल्व देन, नो वरीज। u टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर 1/2 गाइस। ओके, फाइनल आंसर, जसीम सेड फाइनल आंसर इज 64/231। 64/231, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो एक बार, सबका आ रहा है? अरे ये क्या हो गया? अदरवाइज आई विल सॉल्व। भाई किसने पूछा था फाइनल आंसर वाला क्वेश्चन? हु आस्क्ड मी? सर मैंने पूछा था। सर डू वी हैव हाँ बिलाल, आया बेटा? ये आंसर आया तुम्हारा? यस सर, परफेक्ट, यस। आ गया ना? चलो तब इट्स फाइन, तब इट्स फाइन। जी सर। गुड गुड गुड। ओके, अगर एक्सप्लेन करना हो किसी को, अगर है कि नहीं सर आप एक्सप्लेन कर दो लास्ट तक का, बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज टाइम को थोड़ा कंस्ट्रेंट रखते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मुझे था,
तो ये दोनों में से कोई एक सवाल कराना चाहता हूँ मैं, 6 और 7 में से। आ जाओ। ये क्या है, ये -x² x+2 -x², ये चलो ठीक है, ये देखते हैं। See, these are some of the important questions. ये पैटर्न फॉलो होता है। बेसिक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, बेसिक। बस वही है कि whenever we substitute the value, we need to change the limit also। 5/8, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। देखते हैं, अगर और किसी का मैच करता है तो लेट्स सी। जसीम। Jasim, can you just explain me how you did this question? Yes, sir. So I just wrote it as dx by x+1 whole square plus 2 square. X+1 whole square plus 2 square. 2 square। Okay, fine, ठीक है। And then you substituted x+1 as u, right? Yeah, or we can use tan inverse u by a directly. 1 by Correct, a. correct, 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 That's it. correct. You can do it. Good, 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 good. Yeah, then it's correct. Then I hope the answer is correct. Until and unless you have done some calculation error. Otherwise, the answer should be correct. Done, people? बेटा मुझे सबके आंसर चाहिए। Okay, Kevin, good, good, good. Sanika, good. Okay, Justin, your answer is correct. Kevin, Sanika, Jasim, good. Others? I hope everyone have, you must have solved this NCRT, right? बनना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन बनना चाहिए।
आ जाओ जाओ, लेट्स सी एवरीवन। देखो, अभी लिमिट्स को भूल जाते हैं, लेट्स सॉल्व जो हमें आता है बेसिक। सी डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट? Yes, sir. We can write this as completing the square. You remember this, people? This is x square plus 2x plus 1 plus 4. ऐसा करने पे we get dx by x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1। चलेगा? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? अच्छा, यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 by a tan inverse x by a plus c. 1 by a Tan inverse tan inverse into tan inverse x by a x plus c. x by a plus c। बहुत बढ़िया। एंड इफ देयर इज सम लिमिट, लेट्स सपोज a to b। अच्छा, a to b मत रखो, लेट्स सपोज x1 to x2। तो सिंपली यहां से बस अपना दिस कांस्टेंट विल फ्लाई और हमारे पास यहां पर लिमिट्स लग जाएंगे, राइट? राइट पीपल? Yes, sir. एनी डाउट सो फार? अब देखो, दिस इज x plus 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर। वी कैन सिंपली राइट दिस एज -1 to 1। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। Okay, so we can write this as -1 to 1, 1 by a। What is the value of a here? What is the value of a here, people? If you compare this with this, so tell me what is the value of a? 2. 2। बहुत बढ़िया। Then tan inverse, in place of x we have x plus 1, so let's substitute x plus 1 as t। ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा बेटा? लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1 is equal to dt by dx और dx is equal to dt। तो हालांकि आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर बिकॉज देन आई नीड टू चेंज द लिमिट्स। बिना लिमिट चेंज किए, बिना सब्स्टिट्यूट किए भी वी कैन सॉल्व, सिंस दिस इज अ लीनियर x plus 1। तो हम लोग वी कैन राइट दिस एज x plus 1 by 2। कोई दिक्कत किसी को? अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो वैल्यू इज पाई बाई 8। क्लियर है बेटा ये सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे? Yes, sir. ओके ओके ओके। अगर ये क्लियर है देन वी कैन स्टार्ट विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास तुम लोगों ने मैक्सिमम पैटर्न के सवाल कर लिए थे।
Let me just see your last class notes. एक मिनट रुकना. Hmm. Okay, fine. चलो. You did questions from by parts, right, people? You did questions from by parts last class, people? Don't think so, sir. Acha, you guys didn't do questions from by parts, right? You did questions from substitution? People, please confirm. You did questions from substitution? भाई कोई तो बता दो, कोई तो क्लास किया होगा ना लास्ट क्लास में. Yes, sir, 1 minute. हाँ हाँ, check it, check it. कि डेफिनेट का आई कैन सी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर्ड है. Sir, I think we have to start with it. अच्छा, डेफिनेट नहीं हुआ है. पीपीटी में तो दिख रहा है. चलो ठीक, आ जाओ. बाय पार्ट्स से क्वेश्चन हुए थे. यू डिड क्वेश्चंस फ्रॉम बाय पार्ट्स. दिनाकर, Not sure, sir. नॉट श्योर. कोई और बता सकता है? सर बाई पार्ट्स का नहीं किया था लास्ट क्लास में. बाय पार्ट्स नहीं किया था. नो सर. ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इसलिए मैं पूछ रहा था कि बाय पार्ट्स इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज. आ जाओ पहले बाय पार्ट्स समझते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है. आई जस्ट Sir, I मेक यू think we रिकॉल did बाय like the पार्ट्स. basics of by parts, like the isolate rule, and that all we completed, but not the questions. नॉट द क्वेश्चंस. ओके 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 ओके. सो बाकी चीजें, उसका डेरिवेशंस, ये सब चीजें बता दिया गया था. पीपल, चलो आ जाओ फिर. Not sure about the derivation, sir. डेरिवेशंस, चलो आ जाओ फिर. मैं एक बार डेरिवेशन बताता हूँ, उसको क्वेश्चंस करते हैं. देखो, अच्छा, यू रिमेंबर द चेन रूल? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू u dv by dx plus v du by dx. Right, everyone? See, basically, integration by parts, we take it into consideration when, like we get some integration of some function multiplied with the other function. Jab we get two different functions multiplied together and we have been asked to find the integration of that, in that case we use integration by parts. Fine. अब क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, व्हेन टू यूज बाय पार्ट्स. क्योंकि whenever you see different functions, let's suppose you see a question like integration of x cos x. Now this is an algebraic function, this is a trigonometric function, right? So ये एक अलग तरह का फंक्शन है, ये एक अलग तरह का फंक्शन है. You have two different functions. अब दोनों multiplied and you have to find the integration. So in that case we take integration by parts into consideration. Okay? अब ये आता कहां से, तो वो देख लो. क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस कि स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड विद फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. व्हाट मींस, आई एक्सप्लेन यू. वेट, सी, अभी हम अभी वी नो दिस, राइट? ये हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u dv by dx plus v du by dx.
Now let's integrate both sides with respect to x. So we get integration of is equal to integration of okay. इंटीग्रेट करने पे we get here as uv. अब यहां पर देखो, this is u, this is dv by dx. Let's take u is equal to some function in x and dv by dx as g of x. कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक any doubt? So when we do this, we get this equal to u की जगह पे I can write f of x, and this is the as g of x, and this is dx. कोई दिक्कत? यहां पर uv को we can write as u can be written as f of x and v. For v we can write dv is equal to, let's integrate this, we get v is equal to integration of g of x dx. So f of x multiplied with integration of g of x dx plus again v du. V means integration of g of x dx. This multiplied with du by dx means f dash of x dx. Chalo. Now let's take this to the other side. We get integration of f of x into g of x dx is equal to f of x into integration of g of x dx minus integration of g of x into d of x multiplied with f dash of x dx. अब देखो क्या होता है. See, I was saying कि whenever you get a question like this, x cos x, इसका we need to find the integration. So we can see कि this is, let's suppose this is f of x and this is g of x. See, one of the function is called as first function and one of the function and the other function is called as the second function. Now how to choose which one is first function and which one is the second function? तो उसके लिए एक रूल होता है, we call it as islet. I is for inverse, L is for logarithmic, A is for algebraic, T is for trigonometric, and E is for exponential. अब इस हायरार्की को यूज करके we can choose the first and the second function. Means let's suppose here now x is algebraic and cos x is trigonometric. So let's see a पहले आता है या t पहले आता है. So we can see that a comes first. Now since a comes first, therefore x is the first function and f of x is equal to x. Second function will be cos x. So g of x is equal to cos x. अब basically we have given f of x into g of x dx. तो अब अपन क्या करेंगे कि we'll use this formula of integration by parts and we'll solve the given problem. ठीक है बेटा? कोई डाउट यहां तक किसी को? Excuse me, scroll up.
हाँ, यस बिलाल। Could you scroll up, please? हाँ। Okay. Now, जहाँ पे आप ग्रीन कलर से ब्लैक कलर में शिफ्ट हो रहे हो उस वाले स्टेप में आपने जो जो लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रेशन के साइन को तो पूरे में लिया है डी बाई डी यू देन यू बी टाइम्स डी 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 यू, लेकिन अगले स्टेप में फिर वो सिर्फ जी ऑफ एक्स पे कैसे आ जा रहा है? कहाँ बेटा? अच्छा, यहाँ पे जस्ट राइट। अनडेट प्लीज। या जस्ट देयर यस। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सी, इसका इंटीग्रेशन यू विल गेट व्हाट, यूवी, राइट? यस सर। ओके ओके ओके। अब u मैंने यहाँ पर क्या लिखा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट? यस सर। सो एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब dv by dx I have taken it as g of x, right? यस सर। Okay. So integration of dv is equal to integration of g of x into dx, right? यस सर। यहाँ पर so v is equal to integration of g of x dx, right? यस सर। तो बस इसका इंटीग्रेशन uv आया, फिर मैंने uv की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर रख दी। ओके या नहीं, अभी भी इफ थैंक यू यू हैव सर। अ डाउट देन लेट मी नो। नहीं सर समझिए, थैंक यू। ओके बेटा, ओके ओके। एनी अदर डाउट्स पीपल? No, sir. क्लियर है? क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इस पे फिर? आ जाओ, लेट्स गो विद द क्वेश्चन। मैं एक अच्छा वाला क्वेश्चन चाह रहा हूँ। चलो ठीक है। नहीं, रुको रुको रुको, एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। वेट 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 वेट, यहाँ पर कहीं एक अच्छा क्वेश्चन होगा। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलो पीपल, इस क्वेश्चन से तुम्हारे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा बाय पार्ट्स का।
डन बेटा। बेटा आंसर तो मुझे हालांकि जसीम एंड चित्रांश, एज फार एज आई रिमेम्बर तुम लोग दोनों का सही है। आई नीड टू चेक वंस, बट मेरे हिसाब से बोथ आर करेक्ट। गुड गुड गुड। हाँ सबका यही आ रहा है, तब तो सही होगा। करेक्ट श्रुतिका, करेक्ट। अच्छा लेट्स सी पीपल, लेट्स सी। e to the power x sin x, right? चलो, see, this is exponential function, this is trigonometric function, right? तो मैंने एक को फंक्शन, अब किसको फंक्शन वन लेना है, किसको फंक्शन टू लेना है, तो विल डिसाइड दिस बाय यूजिंग आइलेट। वन इज एक्सपोनेंशियल, the other one is trigonometric, so of course this will be our first function and this will be the second one. So I can write this as sin x into e to the power x dx. Now this is equal to people, कोई है जो बता पाएगा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? चलो कोई नहीं बता रहा, फाइन। So this is equal to f of x multiplied with integration of g of x minus integration of e to the power x dx, this multiplied with f dash of x, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x। Awesome. कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? So this is sin x। अच्छा, e to the power x का इंटीग्रेशन इज into e to the power x माइनस, यहां पर e to the power x का इंटीग्रेशन इज e to the power x into cos x dx। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वल टू, अब अगेन ये देखो, ये भी एक, अब यहां पर भी वी नीड, लाइक वी नीड टू यूज दैट व्हाट वी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? अगेन लेट्स यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी cos x, सेकंड फंक्शन विल बी e to the power x, तो माइनस cos x into integration of e to the power x dx minus integration of e to the power x dx into cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x, तो बाहर एक माइनस चला गया, तो ये हो गया प्लस sin x dx। जहां डाउट है बेटा रोक के पूछ लेना। sin x into e to the power x माइनस, यहां से विल गेट e to the power x cos of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x sin x dx। तो बेसिकली वी आर राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ sin x into e to the power x dx इज इक्वल टू, अब देखो इसमें और इसमें कैन टेक e to the power x as कॉमन, so we'll get sin x minus cos x माइनस, अच्छा यहां पर देखो दिस इज e to the power x into sin x dot dx, क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ था। लेट्स टेक दिस एज I, we are basically finding the value of I, right? So I is equal to e to the power x
Sin x minus cos x minus I. This I will come to this side. We'll change it as 2y. So e to the power x sin x minus cos x. So from here I is equal to 1 by 2 times e to the power x sin x minus cos x. लिमिट भी था क्या मैं प्लस क्लियर है बेटा किसको किसको डाउट है इसमें how many of you have doubt in this चलो आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन देखो आई डोंट बिलीव इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है आई बिलीव इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है इफ योर वर्स कॉन्सेप्ट नाइसली तब फिर तुम कितने भी टफ क्वेश्चन दे दो उस कॉन्सेप्ट से यू विल बी एबल टू सॉल्व इट चलो आ जाओ लेट्स सॉल्व दिस लेट्स सॉल्व दिस बेटा चलो आ जाओ लेट्स सॉल्व दिस हाँ ये तो तुम्हें फॉर्मूला याद है इसीलिए यू आर सेइंग राइट केविन यू रिमेंबर द फॉर्मूला राइट Yes, sir. Yes, sir. बट आई वांट टू डिराइव दिस by using integration by parts in that case मैं चाहता हूँ कि derive करो so that you know all the concepts related with integration by parts will be clear कितने भी tough question आ जाए you will be able to solve it though there are very less chances जहां पर कि ये क्वेश्चन आ सके but still I don't want to take any chance क्योंकि there are less chances but still there are some chances right so we first distribute e to the power x in the brackets and then integrate e to the power x f of x other term will cancel actually other term will cancel e to the power x f dash of x integration will be cancelled out correct Jason correct good good very good correct मैं समझ गया correct good job others try it man try it हो जाएगा कुछ नहीं अच्छा चलो आ जाओ as Jasim suggested us let's do this हाँ अभी सही बोला केविन ये चाहिए था मुझे
So we can write this as e to the power x f of x plus integration of e to the power x f dash of x dx. कोई दिक्कत यहां तक किसी को? Anyone with a doubt? No, sir. अब सुनो, ये जैसा है ना, इसको वैसे ही रहने दो. Let it be like this. और इसमें यूज बाय पार्ट्स. इसमें क्या करो? बाय पार्ट्स यूज करो. ठीक है. अब बोलोगे सर कौन सा फर्स्ट फंक्शन ले, कौन सा सेकंड फंक्शन ले? तो बेटा ई सबसे लास्ट में आता है. ये एफ ऑफ एक्स कुछ भी हुआ होगा तो भाई ई सबसे लास्ट में ही आएगा, राइट? सो एफ ऑफ एक्स विल बी आर फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर एक्स विल बी आर सेकंड फंक्शन. अब बस लगा दो जो बचपन से करते आए हम लोग, राइट? कोई दिक्कत है बेटा? किसी को भी डाउट है बेटा? शर्माने का एकदम नहीं है. माइनस ई टू द पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx, और ये वाला यहां से प्लस वाला उतर जाएगा यहां पर. सो प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx. सॉल्व करने पे बेटा दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड. फाइनली विल गेट e to the power x into f of x plus c. Is this clear everyone? Yes, sir. Okay. चलो बेटा, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? Anyone? Doubt is you guys can stay back. We'll rectify the doubts, we'll clear them, and then we'll go to sleep. Anyone with a doubt? No, sir. Okay. Okay. I hope you guys like the session. तुम्हारी बहुत सारी मेमोरीज ताजा हो गई. इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस ब्रश हो गए माइंड में, राइट? Yes, sir. चलो, okay, okay, fine, fine guys. तो you guys keep solving the question, keep sending the doubts या तो DRS, put DRS sessions या फिर message me directly, send me the doubts, we'll rectify them, we'll see the doubts, right? Do not store the doubts, it's the final time. तो बस keep preparing, keep struggling, ठीक है? चलो then, I'll see you guys in the next session. Till then, take care and bye bye. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. thank you guys. Thank you, bye bye.